The end of the fourth over, and Pakistan in a heap of 17 for 2. 17 for 2. They needed a solid start, even if there was a little bit behind the run rate to start with, but just get them in, get some momentum, put a bit of pressure back on the South Africans. Hasn't been the case. Murray's Own Cup pulls apart from the performance on Wednesday. She's been so much better today with the balls. Good length, great lines, a little bit of nibble. 2 early wickets, just befitting her stature in the world game. 17 for 2. A mountain to climb for here from Pakistan to stay in the series. Shabnam Ismail wants to join the party because it is her party. It's her 100th ODI. Oh, she nearly has one. I far prefer it when they're full. Both the tacks, if they erred a bit short. And she was really good in the first game, Momentum ODI on Wednesday, was Shabnam Ismail. Picked up 3 for, and this is her performance. A nice little feather from Manib Ali Siddiqui. And then when she was so needed, she came back to remove Aliyah Riaz when the partnership was threatening. And then the very next ball put her on the hat-trick. Now she's chipped to cover, but just short of the inner ring. She really has a lovely, strong action, has Shabnam Ismail. You know, we talk so much in a fast bowler of bowling over that braced front leg, and she's a perfect example. To all male and female games, she's got a really lovely action. Oh my word, nearly sneaks through. And she's, you know, quite small in stature, but you know, she's that skiddy little bowler that comes in. She puts all her effort behind it. As Brett said, all the momentum goes through her action there. And really, it's yeah, she's just got well, she's one of the world's best bowlers. And quickest in the women's game. She really has been a great servant for South Africa. What an excellent player. Player of the match in the BBL Women's Big Bash League final. Nipped away. Oh, the dive's out, but the dive in vain. Teaser, and the boundary. They're just staring down the leg side there, and comfortably tucked away there by Sahel for a boundary. I just love Shabnam's passion, a fieriness for the game, a competitiveness. I just think... Oh, good cricket. The only blemish there might have been the delivery was a full wide half volley, but it got lashed by Amama Sahel, and Laura Wolfhard redeeming herself a little blemish that yielded a single in the last over. This is quite outstanding. Well, already I think we can say South Africa's out cricket is significantly superior than what we saw on Wednesday, which was abysmal. Four from the over, 21 for 2. Comparatives. Run rate's the same, but the 2 wickets are a significant advantage to South Africa, and particularly Murray's Own Cup. She goes into her 3rd over. 2 wickets to her name, goes to Javeria Khan. Just nurdled round the corner for the run that gets her off the mark. I like the look of her. She's a very slight figure, is Amama Sahel. She doesn't look as if she packs a lot of power, but she's hit some really lovely drives. Very good square of the wicket. Uses the pace of the ball, timing quite exquisite. You can see why the Pakistani
Brains Trust are quite enthusiastic about this young player. Just the timing. She just opens the face, gets it down to third man. Excellent placement. Really good cricket. She's looking the part. And she mirrors herself on MS Dhoni. And I think, yeah, she's a very good prospect for Pakistan. Named in the Dominate the Decade. So it's one to watch in the next few years, that's for sure. What I really like about Sahel is that she really does not look to overhit the ball. She allows the ball to come to her. She's balancing her stance, and as she hits that ball, it's really something of beauty. और ये मैच जीत लिया था. Topped the averages in 2019 in the last series, so with 64. So she's got a lot of pressure on her shoulders, I think, in this team, missing obviously the usual captain Bizra Maroof. But yeah, she's got a lot on her shoulders. That'll be a wide. Apology. Hasn't needed to apologise for much today, Marizan. This looks like perhaps a sprig and the boots might have slipped. Nicely worked away. Four from the over. 25 partnership needed. This has to be one of substance. Somewhere take them up to around about 100 to get in the game here, because 253 is a long way away. The haze of the heat here in Durban on a typically sticky Durban day, the breeze cooling things down mercifully. South Africa asked to bat, somewhat surprisingly, posted a hugely defendable 252. Good contributions, but in the main, Marizan cut the hero in 68 or 45, 10 fours and a 6. Pakistan, the worst possible start, and it's Cup again who struck twice. You want leg stand? Away from me. No, that's two leg. There's two leg. Leg stand. Shabnam Ismail goes to Jabiria Khan. Leg stand. की टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी फिलहाल साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम करती हुई इस वक्त। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान वुमेन्स की टीम की हालत। Her third run picked up in exactly the same way as the first two, just getting onto off stump and knocking it around the corner for one. That asked to be hit. It was short and wide and it got the treatment. This is really good from Amama Sahel. She's started well and is looking threatening as far as Pakistan are concerned. Well, if we continue bowling into her strength and she can capitalize all day, as we see this
short, wide, and punish as it should be. She hasn't missed out much, though. That's the thing. Yeah, when she's got the bad, brilliant, the timing is absolutely exquisite. She's looked really good. Goes again, 4 again. That's better, even better. That wasn't as wide as the previous one, but she hit it absolutely sweetly. And she enjoyed that one because she held the pose at the end there. You wonder whether this lady, Shabnam Ismail, is just trying a little bit hard in her 100th ODI to try and produce something. She hit that so late. Look at the placement. Quite outstanding. Lovely piece of batting. Gee, now we've got a fortress. The impregnable wall away to the offside of 5 of them. Oh, a little bit of extra bounce on that occasion. The Cape to come up against Western Province. Who will be the victors in the Currie Cup semi-finals? Change of bowling. Now you have Pongo Kaka into the attack for South Africa. He has the ability to shape the ball nicely back towards the right-handers and tap him up, not offer much space. Absolute peach of a day here at Kingsmead. Not a cloud in the sky at this stage. Can't promise that at about 4:35 o'clock. For now, stunning day. It's a good stop in the gully region. Never easy when those balls just bounce at least a metre or 2 in front of you. I don't think she got just totally hands to it. I think she had to use other parts of her body to make the stop. Brilliant timing as well. Definitely has been an improved surface here today at Kingsmead. I think with the sun baking down it and the roller being used at the half-time interval, ball definitely coming on a little bit better because we've seen some extremely good timing from the Pakistan batsman.
a few deliveries that have been short and wide. Both these Pakistani batsmen have been quickly onto them. So they are flying at 22 of 20. Vera Khan, more experienced of the campaigners. She's just getting herself in. Let's tip and run. This could be close. Oh, I think a direct hit from a quick pickup could have been interesting. 8 overs done, 37 for 2. That's the bowler's been utilised so far. He's probably not had the best day. Not been outstanding. 2 for 12 for 3. Just a 1 over. Change your bowler. Right him over. There's the bowling figures. Finland has just been through the men's league. What is your take the ball, new ball, and do a job? I'm just surprised she was willing to give it away. New ball in your hand, 3 overs done. Okay. She was taking a little bit of confidence from the fact that she managed to finish the game out for South Africa. In the last over, defend 4 of the last delivery. And really, she started pretty well. Her lengths on the first 2 deliveries have been spot on. And as I say, that she offers up a little bit of width and smashed again through the offside. So many boundaries coming square of the wicket in this innings so far. Yeah, this has been the go-to area for the Pakistani batters, quite square of the wicket. Again, a bit of width on offer. Dealt with accordingly. Keep back to the stumps. And that's where the Klerk needs to be nice and straight at the stumps. We've seen how effective those deliveries have been throughout the day. If you offer up width on a slightly slower surface, it's very easy to hit the ball square. And asking the batter to hit it straight down the ground will prove to be more challenging. That was a little bit of a mow. It was across the line. Somehow maybe premeditating a certain delivery was going to be on offer, but it wasn't reckless cricket at this stage. That one helped fine. So it's a really good over this for Pakistan. 9 from it. 46 for 2. Length, the line, all of it was not good on that last delivery from de Klerk. It really did make life very easy for Sohail. There's the worm from the South African ends, and you can see Pakistan are up with the scoring rate. They've lost the extra 2 wickets. You can also see how strongly South Africa finished in the last 5 overs. 53 runs from those last 5. Really good snow from Kako as well. Very accurate. And the strategy to get Trisha Chetty up to the stumps is pretty clever. I want to make sure that the Pakistan batsmen are anchored in their crease and they can't take their weight going forward without being concerned about playing and missing.
Shikabuni was left out of the side today in order to allow Bongo Kaka into the team. I've been impressed in the times I've seen her operate. I can remember one performance in particular in Cape Town where she was absolutely superb. And she started off well today. Yeah, it's real good. Over the top. That's a nice adjustment, but the contact not quite as Abuna Khan was looking for. Just the single. Quality over, just one run from it, 47 for 2. So the first power play now concluded. 47 on the board. It was South Africa who led the way through Amazon Cup, picked up 2 quick wickets in the first 4 overs. And put Pakistan on the back foot, but a partnership of 30 or 38 deliveries between these two at the crease currently. And just put Pakistan back into the mix. Absolutely no doubt about that, OBW. It's as salmon and trout as you get. You can see quite a few deliveries that were offered up that's short and wide. And Pakistan managed to score square of the wicket. And no surprise, as soon as the power play is completed, as soon as the fielding restrictions are changed, it brings out a change of bowling. Naba, who had a superb debut in the first of the one-day internationals between these teams on Wednesday, he's going to be back into the attack. She was absolutely brilliant. Esther 1 for 19, that was that match. And that's the way to start your economy rate for your one-day international career, just 1.19. So I'm going to have to adjust things just a touch. What your take on them, but it seems like this wicket is not offering as much assistance as what we saw in the first game. And she did have the odd tendency to drag your deliveries down a little bit and offer the ball to be cut square of the wicket. She might have to make sure she's a little more accurate today. Yeah, I think she was pretty impressive on Wednesday. And the good thing that she made sure she handled a good line, good length at times. That's a brilliant shot through the offside. So many boundaries in that area. And that was nicely played. Picked the length early. See how she just cleared the front foot to give herself space for the arms to get through and be able to hit it up and over. Let's change appeal, so extra protection on the offside. Clear intent being shown to the Pakistan captain Zavira Khan. She's looking to go after him, Laba. Not going to allow it to settle today. It's punished down the ground. Could pick up a cup, and the way her day's going, it's a surprise she missed the stumps. Go up and over, and doesn't get the contact she was looking for, Sahel, but it lands just safely and allows her to get through for the single. So 6 runs from the first Lava over, 53 for 2.
pretty good in the last game. Baig was impressive as well, but talking about impressive, popping the ball over the top for a boundary to start the over. Nicely played. Backing herself was Sahel. She's raced along to 35 of 27. Yeah, on this occasion, get the slots rebound. Good contact. Fantastic shots. We have a look at the offside as well. She really is found her timing here today. Drags it on. Exactly what Pakistan were not looking for. But the pressure and the line and the length from Kaka has meant eventually she gets the reward. Pakistan captain has to go. Yeah, I think on this occasion, probably the length. A little bit of a nip back. The length wasn't quite there to cut. Let's just drag it onto the stumps. Sabiria Khan makes away. 13. Pakistan, 58 for 3. Next to the crease, 34 years of age, one of the heroes in the first ODI for Pakistan. She was superb in her performance. Needed some real impetus to the innings, but they're going to need a sustained performance this time around. Need her to be at the crease for a long period of time. Pakistan chasing a big score, but unfortunately for them, keep losing wickets along the way. And that's going to prove challenging. They need a partnership to come together. This is the reason why she's here. Back of her length just cuts back a little bit. So Vera Khan, you can see the disappointment. Didn't really commit 100% to the shot. Dragged it on. Oh, yes. Exactly what Pakistan were not looking for. South Africa can be thoroughly happy. Yeah, I think both teams came at real good intent with the bat today. Looked like the wicket playing a little bit better. Make for some good stroke play. But you almost have the feeling also the Pakistan team playing because they know they have to win this one to stay in the series as well. Definitely have played with a lot more freedom today. They're going to be part of the team chat that they weren't at their best, but they need to back themselves, have some self-belief and go and express themselves in the middle, particularly chasing a score of over 250. It was only 200 in the last game. The tactic of having Chetty up to the stumps and Kaka hitting in areas is proving to be difficult to deal with. 58 for 3. Will continue to a second over. And that's nicely played. Brilliant placement.
Hale is really finding her range. Timing's been good, the contact's been good, and picking the gaps at will. 40 off just 29 deliveries. Yeah, it's tossed up on this occasion. Got the bits of it. Great stroke through the covers on this occasion. How much we're going to see of Sine Loose with her leg spinners today? Well, Polly, I hope much more than the first ODI. The fence is crying out there to see more of her bowling. I saw her warming up before the start of the innings, so she's getting herself nice and loose, trying to find her range for the day. Is now back on the boundary for Nova. Speaking of Sine Lee's leg spin is probably one of the toughest arts of bowling to perfect. And she has been struggling a little bit of late. Probably the reason why we haven't seen as much of her. And she has 97 one-day international wickets, so there's more experience than you remember at times. Sine Loose. A little bit off the boil as of late. But, and that's the purchase we saw in the first game, and that's a real good delivery. I think that's the perfect pace for this pitch today. Giving it some air, has a nice trajectory to it, and as it pitches, it just grips and turns nicely. Good finish to the over from Lover. 5 runs from it, 63 for 3. Here's the tour schedule. First game, South Africa winning by 3 runs. Who would have thought after 42 overs that South Africa would have only have won that first one-day international by 3 runs, but Pakistan fought really hard. This game today, and the third one on the 26th of January. A bit of rain expected for the next week here in Durban, so hopefully it stays away from that Tuesday encounter. In the air, that's the 4th wicket to fall. And that is a massive blow. 41. So Hale is on, and she decides to take the attack again. And all she can do is put out the flag at short mid wicket. So South Africa are now firmly in control. Yeah, this is a change up from Kaka on this occasion. Drag into the leg side. And a brilliant catch by de Klerk in mid wicket. That sees the back of the in-form Sohail. Bit of better, which Pakistan wouldn't have loved to have lost at this moment, but she's gone for 41. Pakistan 63 for 4. So unfortunately for Pakistan, really no momentum to the innings so far. Keep losing wickets at vital times, and the huge blow of Sohail, 41 of the 63 runs to be scored. Sidran Nawaz next to the keeper for Pakistan, and that's a little outside edge. Trisha Chetty, who set such high standards for herself, will be disappointed with that. Edge, and it basically hit in a nice area of the glove, so that's why Chetty will be disappointed. It wasn't a big deflection.
never easy when you're up to the stumps. And Sahel just trying to get on with things. Leg cutter, spotted the slow delivery, tried to drag it across to the leg side. All she could do is pick out de Klerk at short mid wicket. And the decision to get her into the team and into the attack has worked the trick for South Africa. She's 2 for 9 on the 3.4 overs. She bowled with good control, brought a different dimension. Ball nipping back into all the right-handers that Pakistan have in their batting lineup. Here's Zenzalik in the men's game. I heard the keeper standing up, and from a protective point of view, I know the men's keepers love wearing helmets. I just see Trisha Chetty standing up to the seamers without a helmet on. Do you reckon it's a good idea? Well, why not? Tuk Aya is not that quick, so I guess, and Trish is used to standing up to bowlers, so I don't see any safety as it. But when it comes to provincial games, the umpires is actually very strict on having the protective gear on, standing up. 14 down, 63 for 4. She is the most experienced campaigner at this level, so we're going to have to back her. So after 14 overs, 61 for 1 South Africa were. Pakistan 63 runs. They're ahead, but unfortunately 4 wickets down, and that's been a big blow for them. However, it will continue. She drags the first one down. It's pulled across to the leg side. Time for a change of voice up here. We got Claire, Brett, and Karen. Thanks, Polly. 64 for 4, massive trouble. They've scored at a good rate, the rate they need to, but by losing 4 wickets inside the first 15 overs, you really are up against it. Mama Sahel looked incredibly good. Got to a career best, 41, braving her career best that she set in the first ODI. Just watching Mlaba operate here today, I just get a feeling that the ability to, she's young, she's only in her second game, but you find an ability to assess the pace of a pitch you've got to bowl on. She bowled very slowly on day 1. Today, that pace probably doesn't quite suit a pitch that has played a lot better than we thought it would. It's been a little bit quicker, it's come onto the bat under the hot sun, and today probably she's just been a little yard too slow. Cut away, not through. There's a fumble, so they'll get a single. Yeah, dropped it short there, but yeah, maybe, a little bit more variation in the flight of the ball as well. But yeah, a little bit more pace, a little bit more flight variation would assist. She does come over the top nicely, so she always gets, if she bowls it in the right area, she gets a little bounce and turn every time. I would think she would have the ability to set the batters up. Too short, pulled away. It'll find space. It wasn't struck sweetly, but it'll just be a single out to Ismail. 3 from the over. It's 66 for 4. There's a bowling change. Marizan Cup is back. After a successful spell there from Ayabanga. Yeah, exactly. There's no luck. 3 for, picked up 2 for 9 and off you go. And the Cup got 2 for her opening spell as well. That's brushed the pad going down the leg side, but wasn't awfully far away the leg stump. I love when keepers move down the leg side like that. It's a great take by Chetty as well.
good movement, and those can be quite difficult. She's got very good hands as well. She's quite a nice athlete behind the stumps. I mean, she was very impressive, particularly in the first one-day international. Can't underestimate the value of having a very neat and accomplished keeper. You almost don't notice them. They just do a proper job. She's South Africa's leading keeper in terms of caps and in terms of number of dismissals. Yeah, she's got all the experience under her belt as well, and she's seen it all before. Nice and tight on that ball in the inner ring there, Wasile. I must say the South Africans are really good in the field today. They're nice and awake. They're on the ball. They had to be. They were probably very displeased with their substandard performance in the field on Wednesday. Yeah, just going back to Trisha Chetty, 113 catches and 48 stumpings. As a percentage of dismissals, that's incredibly high, the number of stumpings. I remember Dave Richardson going through his career and getting he hardly got a stumping because South Africa just bowled all their quicks, and I think he got Paul Adams came into the game when Dave Richardson had played something like 70 internationals, and then he got his first stumping. Yeah, and Chetty obviously being up there, the first on the list with a number of dismissals, but you know the two keepers that she is above, Sarah Taylor of England and Rebecca Rolls of New Zealand, are really quality keepers. Caps, Trisha Chetty for South Africa. Cap comes back into the attack with a maiden. It remains 66 for 4. South Africa are blessed to have so much experience. Murray's on cap, playing her 110th international. Shabnam Ismail, her 100th today. Ayabonga Kaka come as a change bowler, coming into the side, taking the place of Tumi Sekakuni, and really did the job. I mean, look at that, 4 overs at a miserly economy rate, but more importantly, a couple of wickets along the way. Laba into her 4th over, goes to Nawaz. Going back to Kaka, you know, she had the opportunity to play in the T20 Challenge in Abu Dhabi recently, selected for the Supernovas, which I think can only, you know, playing with Shaminda Atipatu, the skipper of Sri Lanka, a powerful player, playing alongside players like that can only enhance the game. Pulled away. Has she found space? No, she's picked out the sweeper. Just the one. I couldn't agree with you more. If we draw a line through the men's game, the benefit of the IPL on the young Indian cricketers, I mean, the series result in Australia now has just shown the depth, the immense depth of Indian cricket. Another single out to deep square leg. I mean, who would have thought if you took away pretty much the India A side, Kohli out, Bhuvaneshwar Kumra, Bumrah out in that last test, Sharma, Yadav, Shami, I mean, gee, Vihari, still put on, and Ashwin, and still put out 11 players and got the victory. Sweet stroke, timing's good, the outfield is quickened up all day, chases on, oh, well done. Probably the quickest of the South Africa's out cricketers, Mignon de Priya, so they just get back for 3. I think you can maybe equate the women's BBL to the men's IPL for the enhancement that can be used for the women's players. Yeah, absolutely. 17 overs done. It's 71 for 4. We'll have more of that thought when we come back, because after 17 overs, the players are going to enjoy a drink.
pursuit of 253 to square the series. They've got off to a good start in terms of run rate. They're going along at 5 to the over. 4.1, I beg your pardon, to the over. But 4 wickets down means that they're in heaps of trouble. Here are the wickets. Murray's on cup, fresh off a 68, struck early, getting Muniba Ali caught well at slip by Sine loose. Then Nahida Khan playing straight around the front pad. That was salmon trout. The chop on to the toiling Kaka from Jabiria Khan, and then Amama Sahel, who played so well and you just felt didn't need to do that, holds out at mid-wicket. Good catch, Nadine de Klerk. 4 down very quickly inside the first 15 overs. South Africa's bowlers. Shabnam Ismail in her 100th ODI, probably just trying to force the issue a little bit to try and have something memorable in her 100th game. Didn't bowl as well, was too short. Cup and Cock have been top of their game. Good lengths, good lines, and they've been given reward. Mlaba, as she did in her debut, has looked decent, but probably been just a little bit slow through the air today. Murray's on cup will go to Nawaz. What I like to watch Murray's on cup, and as much as I can't ever say I've seen a lot of her, but I think I've seen enough, is in that first spell, she was a lot, the head didn't seem to fall away as much. It was really falling away quite a great deal on Wednesday. But let's just watch if she stays more upright, the head doesn't fall to one side. So it does just still go away a little bit there, and as such, she pushes it down the leg side. Beautiful strong action approaching the crease, but yes, her head does slightly fall away from her there. But I think, you know, again, a bit of rustiness in the first game, and I'm sure that they're aware of that. I'm still Brett and Claire. I'm still, you know, Pakistan 72 for 4, relatively new batsman at the crease. Again, no slip in there. And for me, you know, you're an opening bowler, you're attacking bowler. I would be inclined to, you know, help her and put one in there. Yeah, they certainly haven't shown much inclination other than when the spinners put short. Ask the question and gone! Another one for Murray's on cap. Batsman looks incredulous down the wicket. Oh, can I refer this? But no, you can't, unfortunately. But Murray's on cap gets a third, and it's her day. Of that, there is no doubt. The wicketkeeper Nawaz trapped in front, wears a wry smile as she departs. She's gone for 6. It's 73 for 5. Well, she doesn't really need a slip. Oh, well, that's, yeah. I think a little bit fortunate there, the ball angling down the leg side, but the finger went up nonetheless. And Nawaz departs the scene. Departs the scene for 6. It's 73 for 5. But unlucky that for Sidra Nawaz. We saw, I think it was her who was given out in the first game as well to Tumi Sakakuni with one that's drifting down the leg side. So they say it does follow you, unfortunately, but she's had 2 in a row in both internationals where the ball certainly looked as if it's missing leg stump. And unfortunately, Sidra Nawaz has once again been sent packing. Here's another look. Yeah, hitting just below the roll, but definitely looks like it's shaping down leg side. But as I say, you gotta ask the umpire to make a call. Aliyah Riaz, who struck it cleanly in the first ODI, comes out way earlier than she'd hoped for. Cup, straight on target. Another look at the departure of the wicketkeeper Sidra Nawaz to Murray's on cap, who's just having such a good day. Murray's on cap.
This one, she normally shapes it away, but watch this one drift in and it hits below the roll on leg stump, but she's forward and it always looks like it's nipping down the leg side. I had a thought, Laura Achenbach, and sends Sidra was on her way. A successful over for Marizon Cup. It's 73 for 5. Down, Amama Sahel has looked a cut above the rest. Javiria Khan's record important, chopping on to Ayabonga Kaka after Marizon Cup struck early with a new ball and has come back in a second spell to pick up her third. I like this change, I really do. Sine Lus, the leg spinner, needs a bowl, and if you're going to have a time to have a bowl, so much on top, just get a couple of overs under the belt. She bowled only one in the match on Wednesday and she was expensive, but those numbers suggest there's plenty of something. 4.5 and over with a fifer, 97 wickets. Will she have the rhythm today? Got protection, so it'll just be one. Yeah, it's a good move there by the captain to bring herself on. Just had the one over in the previous game, went for 8 runs. Aliyah Riaz, who likes to play a few shots, but will she take on the leg spinner? Oh, hello, just hurries on a touch. Lots and lots of air, such a variation, almost exaggerated variation from the first 2 deliveries. I'm excited about this. I'm glad Sudan's brought herself on here. She really fares well against this Pakistan side. Low and flat again. Often like to watch when they're feeling a little bit lacking in rhythm, watch the follow through. If it's just a short one pace follow through, often there's lack of control. But if she hits the crease and really gets through, keeps getting that right hip through and gets down the wicket, then perhaps she'll start to find a rhythm. Nice, much nice. She got through the crease nicely there. And also the spread the hands on the pitch just to dry those sweaty palms, huh? Those nervously sweaty palms. Powerfully swept out into the deep, picks the gap nicely. There's ground to be made. They come back for 2. No, they won't. This throw is excellent. It's really strong. It actually strikes the non-striker. 3 from the Lus over. It's 76 for 5. Sidra Nawaz has been on the back end of 2 unfortunate LBWs. This was on Wednesday. Drifting down the leg side there and sent packing. And then today, again, a little nip.
रोहित ने कैच लिया, रोहित नहीं यार, रोहित हटो। कितनी गंदी कैच है ये। हाय ब्रो, माय सिस्टर हस्बैंड ऑफ हो गए हैं। फाइटर गेमिंग, हेलो भाई, इतने दिनों बाद क्या हुआ? भाई शोएब मलिक आया गाइस। बाय पॉल भाई, क्या हो गया रुद्राक्ष? आई एम ईटिंग बिस्किट, बढ़िया। रोहित को टीम में नहीं खिलाया तो उसे वड़ा पाव ही खिला वो भाई इंडिया से कैचेस ले रहा है भाई हमारी, देख रहे हो क्या कितना गलत कर रहा है हमारे साथ ये लड़का। मत भाग, रन आउट दे देगा वो, मुंह पे मारेगा मेरे। शॉट अच्छा नहीं था यार, शॉट ठीक था बट उस पर आउट होना नहीं बनता था यार, क्लियर करना बनता था फील्ड को। लैगिंग फ्रॉम योर साइड, रियली? गेम हल्का FPS कम होगा वो बोलो तो बताओ। FPS तो कम होगा, मेरे ग्राफिक्स अच्छे नहीं है अभी, बट लैग, रियल लैग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी लैग। विराट कोहली इज देयर, हमारी टीम में नहीं है भाई आज कोई भी। इंडियंस को प्लीज एवरीवन प्रे फॉर माय सिलेक्शन। यस एक्सक्लूसिव भाई, होप यू गेट सिलेक्टेड। भाई स्टीवन स्मिथ थोड़ा तो मारो। शॉट, अरे यार फील्डर ये क्यों है वहां पे? स्मिथी बॉय, ये देखो कैसे गंदे डिफेंस करता है स्मिथ। यस लैगिंग, नो मैं क्या बोलूं यार, मुझे तो पता ही नहीं अब क्या सच है क्या गलत, कौन सही कौन गलत। रन ले लेंगे हम इसी बात पे, बहुत बढ़िया। SSFPS कमिंग, प्लीज रिफ्रेश पाहुल। SSFPS वाइड और चौका वाइड का। ओहो हो, सम रन्स कमिंग फॉर अस, 5 रन। मेरी सिस्टर के हस्बैंड ऑफ हो चुके हैं। अरे सो सॉरी यार फाइटर गेमिंग, सो सॉरी यार, ऑफ हो चुके हैं क्या? सो सॉरी। उफ, ग्राफिक्स भी सही थे, सब सही है, यूट्यूब भाग रहा है लगता है, मे बी। रिफ्रेश पेज भाई, मैं रिफ्रेश कर दूंगा स्ट्रीम बंद हो जाएगी भाई, क्या बातें कर रहे हो, मैं रिफ्रेश नहीं कर सकता। भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एकदम से, वो रन नहीं लेने दे रहे मेरे को। नटराजन ने तो क्या ही बॉलिंग डाली है भाई बंदे ने, सही नहीं, बहुत अच्छा। Does anyone think Android will have these games? Maybe होंगी भाई, एंड्रॉइड का लेवल बढ़ता जाता है। बस 277 लाइक्स है, 300 करो फटाफट। फिर जड्डू आ गया भाई, 2 विकेटें निकाल लिए, दोनों विकेटें इसी ने निकाली भाई, इसी बंदे ने। भागो अच्छा। रिफ्रेश क्रिकेट 19 पेज प्लीज। रिफ्रेश कैसे करते गेम को? ऑन ऑफ करो क्या, वापस रीस्टार्ट करो? एक्सीडेंट में ऑफ। अरे यार क्या ही बोलेगा, सो सॉरी। PH में खेला जाबे, पीसी में तो हाँ, पीसी में खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई नाम लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं भाई। SSS ऑन ऑफ
क्या होता है, कोई समझा दो। When did you play this game for the first time? 4 महीने पहले। ब्रो कोई लैग नहीं हो रहा, वो कुछ कुछ को हो रहा है, कुछ कुछ को नहीं हो रहा। अब तुम्हें समझ गेला है बेटे, मारने दे दो कुछ तो। जड्डू क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे यार? जड्डू हमारी टीम से था तू यार, चीटिंग करता है भाई। किसी को नहीं हाथ खोलने दे रहा भाई जडेजा, किसी को भी नहीं। सिंगल सिंगल ही ले पा रहे अपन। लॉफ्ट करो भाई, लॉफ्ट पे तो आउट करेगा जडेजा, मुझे पता है। लॉफ्ट तो मैं करना ही नहीं वाला, इसके अगेंस्ट लॉफ्ट तो करना ही नहीं है। रुक जा जड्डू। अरे चहल भी आ गया। अब सबको ले आओ ना यार मेरे मुंह पे। सारे अच्छे बॉलर्स क्यों नहीं डाल देते एक ही बारी में? ये देखो, ये उठा रहे इस समय भाई। गदर बॉलिंग कर रही है इंडिया। डर के मत खेल पाहुल, डर के मत खेल। इतना धीरे से पढ़ा मेरा कमेंट भाई आपने? क्या हो गया भाई? डोंट एनसिंग ब्रो, वाइटी हग्गू है। ओके भाई, स्मिथ को लेग स्टंप पे ले जाओ तो अच्छे से खेलेगा भाई। अभी तो कुछ भी अच्छे से नहीं खेल पा रहे, स्पिनर्स ने हमारी लगा दी है थोड़ी सी। चलो 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 चलो, सिंगल निकालो तुम। इनकी फील्ड सेटिंग भी सही है और इनकी बॉलिंग ऑन पॉइंट आ रही है इस समय। कोई गलत डिलीवरी नहीं डाल रही है। ऑन ऑफ योर गेम। चलो करता हूँ, रुको भी, रुको पहले। प्रोफेशनल टेस्ट प्लेयर बन गए बेटा, हम प्रोफेशनल टेस्ट प्लेयर बन गए, ठीक है। और हेलीकॉप्टर उठाने की जो कोशिश करी है इस पॉइंट पे हमने, गट्स है भाई, गट्स है, गट्स है। स्मिथ यार क्या किया तूने भाई, बेइज्जती करवा ली अपनी भाई। एक और हेलीकॉप्टर। अबे हेलीकॉप्टर क्यों मार रहा है? मैं डिफेंस कर रहा हूँ एक्चुअली। R1 पे डिफेंस नहीं होता क्या? 171.4 के सब 171 नहीं भाई, 17.1 है। ओ पांडे आ गया भाई, चलो भाई पेसर आ गया। अब हाथ खोलेंगे भाई अपने। पेसर आगे ले हैं। ओह चल चल अंपायर, हट हट अंपायर, हट हट। कंधे से लग के आउटा आउटा करेंगे। ले लो रिव्यू वेस्ट करो प्लीज, प्लीज वेस्ट करो गाइस, डोंट ऑफ द स्ट्रीम। हाँ नहीं कर रहा, बंदे आजकल लाइक नहीं करते यार, प्लीज कर दो यार, ऐसे मत करो भाई मेरे साथ। यार इतना बड़ा एज दे दे भाई, घंटे से नहीं खेल पाया भाई मलिक। धोनी लग रहा है भाई मलिक पूरा। भाई हम लाएंगे जेसन होल्डर। कितनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं आज ये बहुत मार रहे हैं मेरे को। 103 पे 3 हो गए भाई। लॉफ्ट खेलो ऑफ साइड पे भाई, खेलूंगा ना, विड्थ तो दे मेरे को। वो विड्थ नहीं दे रहे मेरे को वो बिल्कुल भी। इतनी ऑन पॉइंट बॉलिंग है। किसी को हल्के मतलब नहीं ले रहा भाई, अब तो नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे भाई। भाग ले बस, टेंशन नहीं भाई। स्मिथ कह रहा हूँ, स्मिथ को लाओ। हाँ होल्डर भाई थोड़ी इनिंग संभाल लियो आज, तेरे से उम्मीद है। होल्डर को मैंने इसलिए भेजा ताकि थोड़ा तेज भी खेले। स्मिथ तो अपना टाइम ले रहा है भाई, स्मिथ को कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा इतना तो रोने वाली बात नहीं है विराट, ऐसे क्या ऐसे वो कर रहा है। इतनी तो कोई बात नहीं थी भाई। भाई बचे उन्होंने होल्डर स्ट्राइक RIP 350+। अरे यार ऐसे मत बोलो भाई, ऐसे मत बोलो। 350+ होंगे आज। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई इनको खेलने के लिए। मेरे पे है नहीं कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी नहीं है इस समय। बट हमें हार नहीं माननी है। देखो भाग जा।
We want 6 भाई, even I want 6, बट 6 नहीं लग पा रहा है. मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी विकेट्स गिर रही है बहुत. Who is captain of ODI 11? Today it's AB de Villiers. भाई क्या लंबा है भाई होल्डर, कितना लंबा है भाई. गैस 288 लाइक से 300 करो यार. मुझे लगता है 250 होगा. नहीं यार, नहीं 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 नहीं, इतना कम नहीं खेलेंगे हम. हाँ, गंदी 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 बॉलिंग. चहल हट. 12 रन 30 बॉलों में भाई. स्मिथ को देख रहे हो क्या? शॉट. 2 रन 1 रन 1 रन 2 रन 2 रन नहीं, एक ही. इस गेम में सब रियलिस्टिक है, बट विराट गाली नहीं दे रहा. ये कैसे 300 होगा पक्का भाई. देखते हैं, देखो कोशिश तो अपनी है कि 350 ही बने. दिक्कत ये है कि मैं गैप निकालूं तो निकालूं कहाँ. सिर्फ वार्नर लग रहा था अच्छे टच में, और तो उसके बाद जितने भी आए हैं सब ने ऐसे ही हगा है भाई. लूज हो गई क्या है? नहीं नहीं, होल्डर की हाइट का ध्यान रखना है पाहुल. होल्डर की हाइट का ध्यान रखना है. उसके लिए बैक फुट पे नहीं था, उसके लिए फ्रंट फुट पे था पुल. होल्डर की हाइट का ध्यान रखो. चौका. अरे फाइनली होल्डर, थैंक यू भाई, थैंक यू. कॉर्नर ने कितने मारे? 51 भाई, 51. होल्डर इतना लंबा है, उसका मुंह में आता है पेट. काफी लंबा है भाई होल्डर सच में. भाई देखो कहाँ खड़ा है भाई वो. धोनी लंबा, धोनी कह रहा हूँ, केएल राहुल से लंबा लग रहा है भाई. केएल राहुल पहुंच गया भाई. स्मिथ पहुंच गया. चल स्मिथी भाई प्लीज कुछ तो अपने हाथ खोल दो भाई. 13 रन 30 बॉलों में भाई. टेस्ट खेलने आए हो क्या? यहाँ पे नहीं मारने हमें 100 रन 40 बॉलों में, 140 बॉलों में. निकाला भाई, निकाला, लड़के ने निकाला. 2 रन और ले लिए. बहुत बढ़िया रनिंग, बहुत बढ़िया रनिंग. होल्डर हाइट सोच रहा हूँ कि लॉफ्ट करो. सच कह रहा हूँ, लॉफ्ट करो भाई. लॉफ्ट पे आउट हो जाऊंगा भाई, माना करो. पिछले मैच में कौन विन हुआ? अपन जीते भाई. चलो सिंगल. ये टाइम अभी सिंगल डबल्स रन चुराने का है. ये टाइम लॉफ्ट करने का टाइम आता है. पावर प्ले मिलता है 30th ओवर के बाद, उसमें भी कर सकते हैं. अभी थोड़ा देखो, विकेट्स बचानी भी तो है. अभी 3 विकेटें जा चुकी है. नॉन स्ट्राइक पर होल्डर जिराफ लग रहा है. गलत भाई. ये ओवर अच्छा गया देखो. 4-1-2-1-1. 4-1-2-1-1 कितने होते हैं? 9 रन. नॉट बैड ओवर एट ऑल. इसको मारना भाई, चहल को मारना भाई. 2 रन 1 रन 2 रन 1 रन भाई. ओ भाई तुम एक बार जो छोटा सा रनिंग वाला वो आता है उस पे देखो होल्डर कितना लंबा लग रहा है. जब रनिंग कर रहे होते हैं ना, वहां पे देखो भाई. स्ट्रीम कितने बजे तक चलेगा? बस थोड़ी देर और यार. नहीं, डायरेक्ट
Oh, what a save! फाइन लेग खाली है मुझे पता है, बट भाई वहां पे शॉट नहीं लगेगी ना, वो स्वीप करूंगा आउट हो सकता हूँ. स्किड कर रही है बॉल. चल. उफ. स्मिथ 100 बनाएगा. भाई स्मिथ पहले रन तो बना ले भाई, 100 बाद में बनाएगा भाई. 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है भाई. टेस्ट खेलने आया स्मिथ ही अपना. 2 रन भाग लो भाई प्लीज. नहीं मत भागो, सर्दी हो रही है बहुत तो बहुत. अरे ही चैट पढ़ लो. पढ़ रहा हूँ नील भाई, पढ़ रहे हैं. विकेट बचाओ फिर लॉफ्ट मारना. एग्जैक्टली लवकुश भाई, एग्जैक्टली यही तो हमारा प्लान है. चहल को मारने की कोशिश. चहल आना हैप्पी विद इट. थोड़ा मैच में रोमांच बढ़ाते हैं भाई अपन. और शॉट भाई, गैप है. 2 रन मिल जाएंगे. भाग ले. नहीं बचे भाई. क्या लंबा है भाई. 200 बॉल पे बन गया 100. 200 बॉल पे बन रहा 100 मतलब. नो बॉल. नहीं रन नहीं. नो बॉल हो गई भाई. पांड्या भाई ने नो बॉल डाल दिया. ओके स्मिथ, ये मौका है तेरे पास हाथ खोलने का भाई. क्या शॉट टट्टी भाई. विकेट भी पार नहीं करी. क्या शॉट के लिए. विकेट के भी आगे नहीं गई बॉल. भूल के बाजी. नहीं भाई नील भाई, नहीं भाई. 100 वॉचिंग 290 लाइक्स. ओ यस, लाइक्स और बढ़ाते जाओ गाइस. 300 करो. 400 लाइक्स का तो गोल है वैसे भी. भाई रन चुराने बस. अब हमें ऐसे रन बनेंगे. कोई इंडियन है क्या ओडी 11 में? नहीं आज नहीं रखा. हमने कहा कि तुम अपनी बेस्ट स्क्वाड से खेलो, हम अपनी बेस्ट स्क्वाड से खेलेंगे. टैप करने की कोशिश, वाइड हो जाती, पाउल छोड़ देता. टाइम इंप्रूव करो. टाइमिंग हाँ होती रहती है भाई, खेल के होती है. ऐसे क्या है. थोड़ा अंदर आ स्मिथ, अंदर आ थोड़ा. अब मार. इन स्विंग भाई. हार्दिक पांड्या कैसे स्विंग कर रहा है. कतल जहर. ये देखो वाइड. इतनी स्विंग वाइड. अरे गंदा अंपायर भाई. कितनी बार थी ये. स्मिथ बनाएगा 200 बॉल पे 100. अच्छा ये बोल रहे हो तुम भाई. वाइड जो नहीं दी ना इसने मेरे को, मैं मार ही देता उस पे. यस पाहुल पुशअप्स. किस बात पे पुशअप? 400 लाइक्स पुशअप नो डांस. ओके 400 लाइक्स कर दो, हम मार देंगे पुशअप. स्मिथ को सुसु लगा है. एमएसडी को क्यों नहीं खिलाया? जब किसी इंडियन को नहीं खिलाते थे हमने कहा एमएसडी को भी नहीं खिलाते भाई. शॉट. ओ भाई होल्डर ओपी. होल्डर ही है आज हमारे, जो थोड़ी सी हमारी इज्जत बचा के रखा हुआ है भाई. ऐसी स्ट्रेट ड्राइव खेल ली उसने, कोई मुकाबला नहीं भाई. कैसे कितना डरावना लग रहा है भाई. बॉल है. ओ भाई मारो. गंदा
यार what is this catch man, what is this catch? Batsman leaving the field, puts out for 80. Batting team are now on 131 for 4. अबे यार भाई पार्टनरशिप चाहिए हमें और यहाँ पार्टनरशिप पे बननी नहीं रही भाई. Oof. Okay. Full focus. भाग. अब स्मिथ मारेगा भाई. अब स्मिथ को गुस्सा आ गया भाई. Every time you mention a good thing कोई आउट हो जाता है. ये वीडियो इसका स्ट्राइक रेट 3000 दिखा रहा है. लॉल. हाँ भाई ये गेम ऐसी है भाई. क्या बोले. भाई अब बनेगी पार्टनरशिप. टचवुड. जिक्स नहीं करना भाई अब. स्मिथ भाई अब मार. भाई एम्पायर मार्स से आया है क्या. इनकी जाली लगी हुई है भाई मुंह पे जाली. No shout out Avengers Joshi shout out is playing lofted shot that much difficult and everything perfect. भाई lofted shot खेलना डिफिकल्ट है when you don't have enough confidence, जो कि भी किसी प्लेयर में नहीं है. फिर आ गया भाई चहल. चल शक्की भाई. शक्की तो स्वीप्स खेलता है भाई तगड़ी. ये देखो भाई तगड़ी स्वीप खेलता है लड़का. शक्की को पता है भाई शक्की स्वीप खेलेगा भाई लड़का. नाइस. उफ. अभी विकेट ही बचाओ भाई. 40th ओवर के बाद ही लॉफ्ट करना. हाँ भाई अब तो बैट्समैन ही कितने बच गए. एबी डिविलियर्स, बेन स्टोक्स, बस खत्म. टाटा बाय बाय. भाई इतनी बाउंस. चल 2 रन. 1 रन आएगा यार. वैसे यार बड़ी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं आज तो ये. अलीशा खुश होती है आज बहुत. 300 लाइक्स हो गए हैं. बहुत बढ़िया. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. रैक अराउंड 35th ओवर. या पॉइंट इसकी अटैक तो तब करना है बट थोड़ा रन तो अभी तो डलने है ना रन. ये सिंगल विंगल भी निकालने के लिए इनको मुश्किल हो रही है कभी. क्या आउट है ये. पागल है क्या. बाहर है इतनी. भाई इसकी स्वीप वीकनेस है क्या. हम अपने बैट्समैन की वीकनेस कुछ चेक कर सकते हैं. हैव यू प्लेड करियर मोड इन दिस गेम. या रिव्यू. व्हाट. डिड दे जस्ट वेस्ट द रिव्यू. दैट इज अ वेस्ट. दैट इज अ रिव्यू वेस्टेड. पहली बात तो इम्पैक्ट इतना बाहर है. एज लगा है इतना बाहर इम्पैक्ट है. कौन कैप्टन है भाई. विराट कोहली. भाई वेस्टिंग अ रिव्यू. सिंपली वेस्टिंग अ रिव्यू. नॉट आउट. थैंक यू. इम्पैक्ट ही बाहर रहेगा या अंपायर कॉल हो जाएगा. इम्पैक्ट बैट ही था. हाँ वही. स्मिथी जीवन दान है भाई. जीवन दान.
नहीं नहीं डायरेक्ट हिट बच्चे भाई वीडियो को 40th ओवर के बाद ही लाना। हाँ 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 उसको तभी के लिए बचा रखा है, इसके बाद ही बेन स्टोक्स ही आएगा। 35th ओवर के बाद ले आऊंगा ये वीडियो को। 35th ओवर के बाद विकेट गिरती है तो ये वीडियो आएगा। नहीं कोई तो गैप दे दो प्लीज यार। आयुष पेटनेकर शाउट आउट भाई। बहुत 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 रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं भाई मुझे ये लोग। मुझे मारना पड़ेगा। हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए बस बाहुल। ये देखो पहली बाउंड्री आती हुई। ये तो बॉल ही गंदी डाली थी लड़के ने। नटराजन ये नहीं यार, नटराजन ये भूवी है शायद। सीधा पॉइंट पे भूवी नटराजन है, नटराजन है। विदाउट धोनी विराट किसी काम का नहीं है। ऐसा क्या भाई। एक और ओफ बिग ओवर कमिंग अप फॉर अस। नाइस नाइस बढ़िया भाई। फ्लो दे दिया भाई लड़के ने, हमें थोड़ा फ्लो दे दिया है लड़के ने। अब लग रहा है कि स्मिथी बचाएगा। हाँ भाई और एक और 3 चौके लगातार भाई, सेम जगह पे सेम रिजल्ट। मैं इसको याद दिलाऊं ओडीआई है टेस्ट नहीं भाई, वो अपने टाइम पे मारेगा भाई। उसको एक बार 50 करने दो। स्मिथ की यही इनिंग्स होती है भाई, 50 करने दो इसको एक बारी, फिर मारेगा भाई लड़का। कोहली समझाने आ गया भाई, देख बेटा आराम से खेल वरना। ये होता है शॉर्ट। अरे बिल्कुल, और ये होता है एक अच्छे प्लेयर की निशानी। 3 चौकों के बाद डिफेंस। Score 275 runs till 40th over and last in overs 100 to 125 runs. Okay, not bad, not a bad idea. Single, easy. 13 रन भाई, बड़ा ओवर चाहिए था हमें। सकिंग करके अरे भाई गलत। One more to the score. आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बहुत सारे भाई, विराट कोहली बोल तुम। नहीं ओए भाई ओवरथ्रो का चौका मिलने वाला था अपने को भाई। ओपीआई का ओपीआई है। चचा क्या करते हो? पेट पे मार दी हमारे बॉल। ये स्मिथ है ना, ये स्मिथ ही भाई ऐसी गंदी शॉटें खेल रहा है भाई तब से आके बंदा। इस बंदे को कोई रोक लो भाई, कोई रोको इसको। एक तो अच्छी शॉट खेल ले भाई। Shakib, play like T20. Yeah. Say my name, please. आर्यन हेलो। तो फिर स्पिनर को लॉफ्टेड शॉट भाई मैं नहीं मारता भाई। स्पिनर को लॉफ्टेड शॉट स्पिनर आउट कर देता है फिर मेरे को। मेक अ शॉट ऑन दैट बैड रिव्यू बाय इंडिया है। अरे आज एक शॉट्स डालनी थी। शिट लेट हो गया अब तो। मैं देखते हैं। बात करते करते भाई कर दिया भाई। बच एज देता वो सीधा। ओके कौन है? नट्टू है फिर से। ठीक है शाकिब ऑन स्ट्राइक।
इजी भाई, ये स्लिप क्यों नहीं हटा रहे? 28 ओवर हो गए भाई, हटाओ भाई स्लिप यार, एक स्लिक्स मारो प्लीज। आयुष रुक जाइए भाई, बैट्समैन के कॉन्फिडेंस है नहीं अभी, सिक्स मारना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल, ज्यादा नहीं, नहीं, अरे ये यहाँ पे लेना था। देखो ये देखो भाई, चौका मारा है हमने बिना चौका मारे, इसको कहते हैं ओपी गेम प्ले। बिना चौका मारे चौका मारना है तो पाहुल की स्ट्रीम पे मिलेगा, देखो सिर्फ। ओ भाई व्हाट अ शॉट, शकीब तो गलत खेल रहा है भाई, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटी। एंड अनदर वन भाई, फिर से 3 चौके, शकीब को रोकना नामुमकिन है आज। शकीब गदर मचा रहा है फील्ड पे, नटराजन बेचारा बहुत पिट रहा है भाई, उफ, यही इनिंग चाहिए भाई अभी शाकिब से। 3 चौके फिर से भाई, 32 ऑफ 17। एबीडी खेल रहा है, हाँ भाई खेल रहा है। फिर ओवर थ्रो अंपायर, मेंबरशिप कब लाओगे? अभी थोड़ा टाइम है भाई, अभी नहीं। Come on, Shakib, come on. We need another boundary. We don't actually. We need a single. That is okay. इंडिया इतनी गंदी खेलती है, गंदा का खेल रही है भाई, इतना तो अच्छा खेल रही है, हम गंदा खेल रहे हैं उल्टा। 166 पे 4 है के भाई, चहल को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है आज। अभी तो जड्डू भी बचा हुआ है यार। याद है मैट रेंचो मैच के बीच में टट्टी करने से, ये क्यों याद रखेगा भाई कोई? कैसी बात है भाई। तो बेस्ट मैंने दोबारा, अरे यार थैंक यू यार, यार क्या क्या मार रहा है, हाँ भाई शकीब तो क्या मार रहा है भाई। टचवुड कुछ रिस्क नहीं आज भाई, जितना जिंक्स करेंगे उतना टचवुड बोलना है भाई। भाग स्मिथी, भाग तू। स्मिथी तो भाई पता नहीं क्या ही खेलने आया है आज, एक शॉट नहीं लगी लड़के से। ये शकीब इजी खेलना है, देखो विकेट नहीं देनी अपनी फालतू में। उफ, भाग जाओ, बढ़िया। लेग बाय के रन मिलते हुए, ओ किस टांड पे मारी भाई, चहल के सर पे मारी। भाई तुम्हें दिखाता हूँ अभी भाई, तुम ये देखो भाई चहल के सर पे मारी थ्रो भाई, ये देखो केएल राहुल की थ्रो देखना, अभी तुम्हें दिखाएंगे भाई ये। अभी रुक जाओ, अब थोड़ा कैमरा एंगल सही करने दो भाई। आ रही है भाई, बॉल आ रही है भाई, बॉल ये रही। ओ नहीं, कहाँ मारी? कहीं तो पड़ी भाई, मेरे सर पे पड़ी क्या? उसके अल हसन के सर पे पड़ी क्या? ड्यूनोल मोल जले, हाँ भाई आई नो। सिंगल इजी स्मिथ कैसी इनिंग खेल रहा है भाई, लेकिन अच्छा है एक बंदा में एंकर चाहिए, एक अच्छा बैट्समैन रुका हुआ है, टचवुड जब तक रुका हुआ है।
चौका। ओफ मैन, दिस गाय शाकिब। और ड्रिंक्स ब्रेक हम भी पियेंगे भाई, हम भी पियेंगे। रोहित शर्मा पानी लेके आ गया भाई। रोहित शर्मा भाई पानी लेके आए हैं। क्या हाल है बाजी? साहिल राव बढ़िया भाई बढ़िया। शाकिब अच्छा खेल रहा है स्मिथ से। हाँ भाई, बट स्मिथ ठीक है, हम ज्यादा रिस्क ले भी नहीं रहे स्मिथ से, शाकिब से रिस्क ले रहे हैं पर। ओ जड्डू आ गया 2 विकेट लेके भाई, 2 विकेट्स के साथ है जड्डू। चलो सिंगल। पक्का से जड्डू शाकिब को लेने आए हैं ये। शाकिब बहुत ज्यादा मार रहा है, पार्टनरशिप बन रही है ना, पक्का शाकिब को लेने आया ये। बट मैं इसको दूंगा नहीं शाकिब, टचवुड। तो हर बॉल के बाद टचवुड बोला जाएगा। ओ टाइमिंग। शाकिब चौको से ही बात कर रहा है, उसको सिंगल डबल लेना ही नहीं है, वो चौको से बात कर रहा है। क्या खेल रहा है भाई बंदा। 3 फील्डर के बीच से निकाली उसने ये शॉट, 3 फील्डर। 42 ऑफ 24 इनिंग्स भाई। नहीं नहीं, हो सर जी कैसे हो? बढ़िया। तो लक्ष्य के साथ भाई तेरा प्रोजेक्टेड स्कोर 350 प्लस था ना? प्रोजेक्टेड नहीं था, हमारा डिसाइडेड स्कोर था, हमने डिसाइड करा था उतने मारेंगे। चलो सिंगल इजी। टीम का नेम सिर्फ ओडीआई अच्छा नहीं लग रहा है, वर्ल्ड 11 रख देते। ओडीआई कैसे हो गया टीम का नेम? लॉल, मैंने W11 ही रखा था वैसे। कोई ग्लिच हो, मतलब या तो मैंने फिर कुछ हक दिया वहां पे, एब्रीविएटेड नेम में मैंने वो कर दिया होगा। वाइड। अरे अरे गंदे अंपायर, वाइड देता भाई, क्या मजाक है ये। नहीं ब्रो अब मारो। अरे फील्ड फील्ड अभी कहाँ, 35th ओवर भाई, पार प्ले। बाउंस। बाउंस बाउंस आ रहा है भाई पिच पे। ठीक है समझ गए। चौका नहीं, 2 रन। ये थोड़ी लो शिट। हाँ हो जाएंगे, पाहुल इतना क्या डर रहा है भाई। आज वो पूरा और अच्छे से हक के आया है शाकिब। आज फील्ड पे नहीं हक रहा इसलिए, क्योंकि वो अच्छे से मैच में हक के आया। मैच में हक के नहीं पाहुल गलत नहीं बोलना, वो ग्राउंड से पहले हक के आया ताकि वो फील्ड में ना आगे। सिंपल। 183 बन गया है भाई, 183 31 ओवर्स में। ठीक है, 5.5 का रन रेट, नॉट बैड भाई। 2 रन। स्मिथ नहीं भाई, ये तो एक ही भाग पाएगा स्मिथ तो। मैं गॉड बिकम यू वेरी सक्सेसफुल, मे गॉड बिकम यू वेरी। अरे तो राक्षी थैंक यू। अल हसन ओपी स्मिथ 30 स्कोर देखो उनका।
कोई बात नहीं, खेल रहा है भाई लड़का, अपनी पेस पे खेल रहा है, मारेगा अभी। चल चल चल, आराम से। मैं टेस्ट प्लेयर बेस्ट हूँ गेम में और रियल में भी। अरे बढ़िया। ये 100 गेम है क्या? नहीं भाई, पॉइंट्स टेबल दिखा दो नफिया भाई, मैच के बाद यार, मैच के बाद, अभी नहीं दिखा पाते। उफ, नहीं। फिर स्पिनर आएगा क्या? दोनों एंड से स्पिनर लगा दी भाई इन लोगों ने, गलत। सिंगल। नाइस फील्डिंग यार। क्या चल भाई? अरे जबजोत भाई हेलो। एबीडी खेल रहा है? हाँ भाई। स्मिथ को कॉन्फिडेंस कब आएगा? पता नहीं भाई, 60 बॉलें खेल ली बंदे ने, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसका। क्या बोले भाई स्मिथ को? कैसे खेल रहा है? विराट शर्मा हेलो भाई। वाई इग्नोरिंग? अरे नहीं, नॉट इग्नोरिंग यार। टच शुड मतलब क्या पाउल भाई? टच शुट बोलते हैं जब तुम चाहते हो नजर ना लगे किसी चीज को, तो टच शुट बोल देते हैं। अरे भाई स्मिथ भाई, पहली तो शॉट ऐसा लग रहा है थोड़े बाउंड्री के करीब आई है ये शॉट, स्मिथ की पहली शॉट। वेस्ट इंडीज जीत गए। हाँ भाई, हाँ। ऐसा कोई गेम है क्या एंड्रॉइड में? और ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, बट WCC3 वगैरह ये सब है थोड़े से। ओए यार, ये भी इतनी अच्छी फील्ड कर ली, इतनी अच्छी शॉट मारी। स्मिथ की किस्मत ही नहीं है आज। 6 मारो। अरे भाई किधर से मारे भाई? तुम्हें दिख रहा है क्या? कहीं से गैप दिख रहा है मेरे को स्मिथ के लिए? ये देखो भाई। विराट भाई हेलो भाई। राशिद खान को लिया है? नहीं भाई, राशिद खान नहीं है, ओडीआई है ये, T20 थोड़ी है। अनमोल लीजिए से बेस्ट हो। अरे यार भाई ऐसे नहीं, दोनों बढ़िया है। भागेगा? भाग लिया भाई, बढ़िया भागा। उफ, लास्ट बॉल पे सिंगल लिया स्मिथ ने। कुछ ना कुछ हक के भाई कर ही रहा है वो। भाई वेस्ट इंडीज से जीत गए हो, अब वतन से हार जाओ फॉर इंडिया। नहीं भाई, ओ बूम बूम आ गया भाई, बूम बूम आ गया। स्पिनर हटा दिया भाई। पावर प्ले शुरू? क्या पावर प्ले शुरू? नहीं अभी नहीं हुआ। बूम बूम क्यों आया फिर? मिथी भाई अभी भी सिंगल लेंगे, अभी भी सिंगल भाई। शकीब है क्या? पाहुल पाजी भी अच्छी तरह से हक के आए हैं स्ट्रीम से पहले। टचवुड, आज सब चीजों से पहले टचवुड बोला जाएगा भाई। चलो भाई 50 फॉर शाकिब। ओपी इनिंग्स भाई, बंदे के लिए तालियां होनी चाहिए। व्हाट एन इनिंग्स भाई, जहां पे कहा हम लोग भाई, कहा रन रेट हमारा कहीं भी अटक गया था, इस बंदे ने आके जो खेली है ना गेम भाई, जो बचाया है हमको, अनबिलीवेबल।
ये देखो, ये तो चचा से एक टाइमिंग नहीं निकल रही है आज। स्मिथ चाचा कुछ तो कर लो भाई, क्यों इतना धीरे खेल रहे हो भाई? स्मिथ चाचा तो आज अलग ही खेलने आया है भाई। 28 from 64 भाई। ओ पहली शॉट आती हुई भाई। 2 साल बाद भाई स्मिथ के लिए खड़े होके तालियां भाई। 2 साल बाद चौका मारा है स्मिथ भाई ने, खड़े होके तालियां भाई स्मिथ के लिए भाई। स्मिथ भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। लड़के ने एफर्ट लगाया भाई, एफर्ट लिया है भाई लड़के ने, चौका मारने का एफर्ट लिया भाई लड़के ने। ये देखो फिर आ गया भाई स्मिथ अपनी पे फाइनली से। इस दिन मल्टीप्लेयर या मल्टीप्लेयर है। गौरव कुमार हेलो भाई। ओपी शॉट सही में भाई, क्या स्ट्रेट ड्राइव निकाली भाई फाइनली स्मिथ ने। 33 of 66, 50 का स्ट्राइक रेट इसका कायम है भाई बंदे का। और शाकिब ऑन द अदर हैंड, उसको बाउंड्री से ही मजे आ रहे हैं आज। वो चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहा भाई। वैगन व्हील देखो उसकी, चौके देखो उसके, हद जगह किया इसने। वो फिर से आ गया जड्डू। सिंगल मिलेगा। स्मिथ का कॉन्फिडेंस, वो भी स्टैमिना भी कम होते जा रहा है। ब्रो एक बार कर स्ट्रीम के सेंटर में एक नींबू दे मिर्ची लगा लो। ओ भाई गलत बातें नहीं। भाई फ्री फायर का क्या सीन है? अभी तो कोई सीन नहीं है जुगजोत सिंह भाई। गाइस जो भी आ रहा है फटाफट लाइक दबाओ यार। 323 लाइक्स है, 400 करने हैं आज फटाफट 400। और सब्सक्राइब भी करो जिसने नहीं करा है अभी तक चैनल को। शकी भाई 35th ओवर आने वाला है भाई। 35th ओवर आने वाला है। पावर प्ले पाजी हार्ड ड्राइव डाल दिया फीफा 20। नहीं भाई 3 दिन से मैं एसएस के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। उन्होंने बोला वेडनेसडे को होगा आपका काम। वेडनेसडे को आना सर, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे की छुट्टी है मंडे को। उन्होंने मुझे कहा आज आप लैपटॉप छोड़ दो, वेडनेसडे को ले जाओ। मैंने कहा 4 दिन स्ट्रीम नहीं करूँगा, मर जाऊंगा मैं। तो फिर कहते सर आप फिर वेडनेसडे को ही आना। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, वेडनेसडे को मिलते हैं आपसे। हाँ, आपकी जॉब से कितनी सैलरी आती है भाई? ऐसे बता नहीं सकते यार सैलरीज। स्मिथ प्लीज यार, अब तो प्लीज यार स्मिथ यार, बहुत हो गया भाई तेरा। सिंगल ही भाग ले भाई तू। यस पाहुल भाई की अपील है, फटाफट लाइक कर दो। यस और सब्सक्राइब करो। मुझे पता है बहुत लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। फटाफट करते रहो। स्टीवन स्मिथ यार, इसका स्टैमिना भी खत्म हो रहा है अब तो। ये देखो स्मिथी प्लीज कहाँ मारेगा तू खुद बता, मैं वहीं पे मारूंगा। ये देखो भाई, ये मारना है। लॉफ्ट विद शाकिब करेंगे, अब करेंगे धीरे धीरे उठाएंगे। अभी थोड़ी फील्ड वो हो गई है, अब थोड़ा मजा आएगा।
ब्रो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेनी चाहिए थी, कोई झंझट नहीं होता। अरे नहीं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का कनेक्शन बहुत, फिर मैं कहाँ कहाँ लगा के यहाँ पे रखता फिरता। इससे अच्छा एक इंटरनल डलवा लो जो मेरे को चाहिए ही। नाइस शॉट, बट सिंगल मिलेगा। 35 ओवर पे स्मिथ को आउट करा देना। तुम जाओ, अगर इतना लंबा खेला है तो अब उससे रन मरवाएंगे भाई। विराट शर्मा बिल्कुल पहचाना भाई। ओए देखो भाई स्मिथ, देख रहे हो क्या? कम है लड़का अपना किसी से? नहीं है, किसी से कम नहीं है अपना लड़का। क्या ढूंढता है भाई फील्डरों के बीच में से? 40 पे आ गया भाई, फाइनल 40 पे आ गया। 1 साल बाद। सिंगल, नाइस। अब क्या में अभी एसएसडी लगी हुई है, प्री इंस्टॉल्ड आई थी, बट नाउ वी नीड एन एचडीडी एज वेल क्योंकि स्पेस नहीं है। ब्रो टेल माय नेम। विनोद हेलो भाई, इंडिया को मत हराना। क्यों भाई, हमें भी तो जीतना है। अरे भाग ले स्मिथी, भाग तू भाई, तू भाग ही ले। नहीं दूसरा नहीं। ओए डायरेक्ट हिट। मैं फैंटनी गेम में आज 50 रुपीज जीता। अरे बढ़िया टेक्निकल नेचर। सो आई वांट टू प्ले विद यू इन मल्टीप्लेयर प्लीज। आयरन खेलेंगे यार, खेलेंगे। अभी रुक जाइए थोड़ा भाई, खुदा का वास्ता उस अंपायर को एडिट कर लो। अरे यार, हल्का सा अगर इस तरफ होती तो चौका था भाई बंदे से। शकीब मार यार, थोड़ा सा तो मारा। अब मारने का समय आ चुका है। अब नहीं मारा तो कब मारा देखो। नहीं, फिर से वही। वो उसको याद ही नहीं है थ्रो करनी है भाई, फील्डर को। रन ले लिया हमने। अरे बढ़िया भाई, जो सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक फटाफट करते रहो भाई। वी आर क्लोज टू 20K पे गिव अवे है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। 20K पे गिव अवे अनाउंस करेंगे मस्त। उठाने की कोशिश करी मैंने, नहीं उठा पाया स्मिथ। एसएस वीवो बुक है क्या? मेरा वीवो बुक है, मेरा वीवो बुक गेमिंग कोर है। वीवो बुक गेमिंग कोर है। बाजी आ गया वापस, बाहर गया था। अरे मंथन हेलो भाई। अरे यार नहीं, रन मत लो, डायरेक्टेड आएगी। बच्चे यार, नट्टू रुक जा तू यार, इस ओवर में कुछ भी रन नहीं गए। Let's go. Shakib going for it. Nice. 6 आया भाई शाकिब के बल्ले से। कितना एसएसडी? 500 GB। मारा भाई, मारा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनूस लग रहे हो, मत करो मुझसे। चल स्मिथी भाई प्लीज।